Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online classes of Iqra Hufaz Boys Secondary School, project of Iqra Education System. My dear students, yesterday we completed chapter number 2 in the English text, and today we are starting English composition. As you know, in the previous classes, we learned and wrote letters and applications. And today we will learn how to write an essay. बेटा जैसे पिछली क्लासेस में हमने लेटर्स एंड एप्लीकेशन लिखना सीखा और उसके बाद लेटर्स एंड एप्लीकेशन लिखी, उसी तरीके से टुडे वी विल लर्न हाउ टू राइट एन ऐसे. हम सीखेंगे कि ऐसे कैसे लिखते हैं और फिर ऐसे लिखेंगे. ऑलराइट, बिफोर राइटिंग एन ऐसे वी नीड टू डिस्कस सम बेसिक थिंग्स लाइक व्हाट इज एन ऐसे. What is an essay? An essay is a group of paragraphs that support a single topic. An essay is a group of paragraphs that support a single topic. Essay एक ऐसे piece of writing को कहते हैं जिसमें कुछ paragraphs होते हैं जो एक single topic को support करते हैं. और ये जो सिंगल टॉपिक है, इट कैन बी अबाउट अ पर्सनैलिटी, किसी शख्सियत के बारे में हो सकता है. इट कैन बी अबाउट अ प्लेस, किसी जगह के बारे में, और अ थिंग और एनी गेम और स्पोर्ट्स, या किसी गेम के बारे में या किसी चीज़ के बारे में हो सकता है. ठीक है. एन ऐसे हैज़ 3 मेन सेक्शंस, और ऐसे में हमारे पास 3 मेन सेक्शंस हैं. नंबर 1 एन इंट्रोडक्शन, नंबर 2 सपोर्टिंग और बॉडी पैराग्राफ्स, नंबर 3 अ कंक्लूजन पैराग्राफ. ठीक है. नंबर 1 एन इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में क्या होता है? इट स्टेट्स द टॉपिक ऑफ एन ऐसे. ऐसे का जो भी टॉपिक है उसको इसमें बयान किया जाता है इंट्रोडक्शन में. उसके बाद सपोर्टिंग और बॉडी पैराग्राफ्स. सपोर्टिंग और बॉडी पैराग्राफ्स कंटेन सपोर्टिंग पॉइंट्स दैट एक्सप्लेन द डिटेल्स ऑफ द टॉपिक. इसमें क्या होता है? इसमें जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ उसके सपोर्टिंग पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजाहत इसके अंदर पेश की जाती है, जिनकी वजाहत इसमें लिखी जाती है. और सबसे लास्ट में अ कंक्लूजन पैराग्राफ. कंक्लूजन पैराग्राफ में क्या होता है? इट समराइजेज ऑल द पॉइंट्स. जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें इसका खुलासा किया जाता है. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी ऑन विच टॉपिक डू वी हैव टू राइट एन एसे टुडे. Our essay topic is my favorite personality, and the favorite personality is Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. As you know, an essay has 3 sections, 3 main sections. First, introduction, then supporting paragraphs, and conclusive paragraph. So we start an essay with introductory paragraph. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we can write this in English as peace be upon him, is the last prophet of Allah. He was born at Makkah in 571 AD. His father Hazrat Abdullah had died before he was born. He was brought up by his mother Bibi Amna. Then he was brought up by his loving grandfather Abdul Muttalib. This is the introductory paragraph. Now we will write some supporting paragraphs. ठीक है. Here I have put the paragraph number. This is the first paragraph, this one is second, and this one is third. Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam grew into a fine boy. He was very kind and gentle. He was loved by the people.
His boyhood as well as his youth was very pure and pious. Pious means muttaqi. People call him Sadiq, truthful, and Amin, honest. Third paragraph. At the age of 25, he married Khatija Begum, a 40 years old lady. She was the richest lady in Arabia. She was greatly impressed by his fine qualities. Paragraph 4. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had a unique character. His character was spotless and perfect in quality. He was very kind. He showed kindness to his enemies. Paragraph 5. When the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 40, the angel Jibreel brought him the first message of God. He began to preach Islam. In those days, people of Arabia worship idols. He told people not to worship idols. He told them to worship the one and the only God, Allah. Paragraph 6. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam died in 623 AD at the age of 63 years only. His sacred tomb is in Medina. And paragraph 7, and this is conclusive paragraph. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the best of all men and women. He is the last prophet of Allah. He showed the right way to the people of the whole world. Alright, now you have to write this essay in your notebook and then learn it. That's all for today. Assalamu alaikum.